Hello everyone, this side Neetu Singh, Assistant Professor of Indraprastha Law College. So in this lecture we are going to discuss about judicial structure in India. In this lecture we are going to cover the judicial system of India in this topic, Supreme Court, its role in the judicial system, and jurisdiction of Supreme Court, the High Courts and its role in the judicial system, and the appointment of judges, number of judges, qualification of judges, tenure of service, salary of judges, and revenue, and subordinate courts of India, and also the panchayats. It means in this lecture we are going to discuss about all the judicial system जो कि हमारे country में applicable है, हम जिस judicial system को follow करते हैं. So let's start with the lecture. So, the Indian judicial system follows the common law system based on recorded judicial precedents as inherited from the British colonial legacy. Exactly. So, the court system of India comprises the Supreme Court of India, the High Courts, and the subordinate courts at district, municipal, and village levels, जिसमें पंचायत और ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी. तो the present judicial system of India is being made effective through the Constitution of India. So the judicial system of India is mainly consisting of three types of court, and these courts are Supreme Court, High Court, and the subordinate courts. So the effective rules and regulations are made of the Constitution and other laws and regulation structured mainly upon the basis of British law with the improvised version or improved version of suitable for India. Exactly. So these rule and regulation along with the constitution are elementary in fixing the composition, the jurisdiction, and the power of respective courts. So this is the some background. So next is the Supreme Court and its role in the judicial system. Next topic is in your syllabus is hierarchy of courts. In that topic we will also discuss about these courts and all. Okay, so Supreme Court and its role in judicial system. Basically this court is with the status of the highest level of courts as per chapter 4 of the part 5 of Indian Constitution. So this court is situated in the capital of India, and the panel of judges is comprised of Chief Justice and 20 other judges. So appointment of judges. The judges of Supreme Court are being appointed by the President of India. And the qualification, he should be the citizen of India, he should have the experience of serving as a judge of High Court for a minimum period of at least 5 years, or he should be an advocate of High Court for at least 10 years, or he should be considered by the president as a distinctive jurist. Okay, ये president की power है. And the judge of the Supreme Court is eligible for performing his duties by holding office up to the age of 65 years. If he has not resigned or disqualified on the basis of any act of misbehavior or proving incapable of holding his duties. So these are the qualifications. तो सुप्रीम कोर्ट का जब आप रोल देख रहे हो तो फर्स्टली यू मस्ट अवेयर दैट दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री. एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एंड देयर आर हियर आर सम क्राइटेरियाज. ये आपका. अब नेक्स्ट इज ज्यूरिसडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का. व्हाट इज द ज्यूरिसडिक्शन. जब भी आप ज्यूरिसडिक्शन की बात करोगे सुप्रीम कोर्ट के तो वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड है. कौन से पार्ट्स हैं वो. दिस इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, फिर अपीलेट jurisdiction, and in case of any criminal dispute Supreme Court has the power to exercise extraordinary jurisdiction and advisory jurisdiction. ये सारे jurisdiction इसके आएंगे. So when we are talking about the jurisdiction of Supreme Court, तो उसके टाइप्स हैं. फर्स्ट वन ओरिजिनल. ओरिजिनल ऑब्वियसली जो उसको
सौंपा गया है. लाइक द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज ओरिजिनल jurisdiction exclusively to hear the cases of dispute between the central government and the state government or the interest of the states. And the Supreme Court has original but not exclusive jurisdiction for enforcement of fundamental rights as per the provision of Constitution of India through the way of writs. Writs भी है भी आपके syllabus में, वो हम आगे discuss करेंगे डिटेल में. Next, appellate jurisdiction. So the Supreme Court has the jurisdiction of hearing the appeal raised against the judgment of all high courts of India, provided the respective high courts grants the certificate related to the query about the interpretation of the Constitution of India. In case of any civil dispute, if the high court thinks that the intervention of Supreme Court is required to resolve substantial query of law regarding importance in general is there, and the high court infers that the specific query is to be decided by the Supreme Court. So original jurisdiction इसका ये है, और appellate में जो अपील्स होती हैं वो उसके jurisdiction में आती हैं. इसके बाद अगर criminal dispute की मैं बात करूँ, जैसे मैंने अभी आपको सिविल का बताया, तो इफ द हाई कोर्ट थिंक्स दैट द सेम इज टू बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू हियर एनी क्रिमिनल केस विदाउट द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट कन्फर्ड बाय हाई कोर्ट थ्रू विच एनी वर्डिक्ट ऑफ डेथ सेंटेंस इज बीइंग प्रोनाउंस्ड while reversing the original judgment of the lower court of release order to the accused, or in case of withdrawal of case from the lower court. So Supreme Court has the power to exercise to extraordinary jurisdiction. सुप्रीम कोर्ट को पावर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन की. द लॉ इज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज पुट द बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स अक्रॉस इंडिया. इवन द सुप्रीम कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू क्रिएट एनी रूल ऑफ गवर्नमेंट विद द अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट इज डिफाइंड एज द कोड ऑफ रिकॉर्ड विद द राइट टू मेक पनिशमेंट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. Last but not the least is advisory jurisdiction. The Supreme Court has the option to report its opinion to the President about any question raised of public importance referred by the President. It means कि आप जितनी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे मैंने यूज़ की है in this section jurisdiction of Supreme Court में, तो जो ओरिजिनल है you can understand ओरिजिनल क्या हो सकता है, अपीलेट है आप अपीलेट भी अंडरस्टैंड कर सकते हो वो क्या हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू एक्सरसाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी jurisdiction. यू कैन अंडरस्टैंड ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट है तो ऑब्वियसली इसके पास ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होनी ही चाहिए. एंड एडवाइजरी मतलब उसने एडवाइजेस जो देता है वो उसका एडवाइजरी jurisdiction है. सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइजेस देता है वो उसका एडवाइजरी jurisdiction है. नेक्स्ट पे हम आते हैं. दिस इज the High Court and its role in judicial system. So the Constitution of India, इसके कौन से पार्ट में? चैप्टर 5 पार्ट 6. ठीक है. सो द मेन फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो स्टैब्लिशमेंट की अगर आप बात करो, स्टैब्लिशमेंट में द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्ड दैट ईच स्टेट और मोर देन वन स्टेट शुड हैव वन हाई कोर्ट. ठीक है. Court of record. All the high courts have the power to pronounce punishment for contempt of court, and thus they will be treated as court of record. अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की अगर आप बात करोगे तो ऑब्वियसली इनकी भी कुछ क्वालिफिकेशंस होंगी. द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट. ठीक है. नंबर ऑफ जजेस, कितने जजेस होंगे? The President of India has the authority to fix the number of judges of the High Court as per requirement. Means, so the basic factor for this purpose is being settled through the
central executive which can decide about the number of judges in high court, which is being decided with flexible attitude. Okay, so what is the qualification मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, a person being the citizen of India with holding the judicial office in India for 10 years or an advocate of high court for 10 years eligible for being the judge of high court. दिस इज द क्वालिफिकेशन. टेन्योर क्या होगा? अप टू 62 years. Till then they cannot be removed from their duties if any occurrence of misbehavior or incapability is proved that second by 2/3 of members of both houses of parliament through voting. Salary of judges, revenue, these are the थिंग्स. आप एक बार इसको सैलरी में अगर मैं बात करूँ, दिस इज डन एज पर प्रिस्क्राइब्ड. ये हमने डिस्कस किया भी है पहले के लेक्चर में. आई डोंट नो टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स. तो टेन्योर ऑफ सर्विस 62 हो गया. सैलरी, दिस इज डन एज पर प्रिस्क्राइब्ड डिक्लेरेशन इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट एनी amendment of the constitution. Revenue, the old fashioned restrictions in 1915 regarding revenue is being outdated on the original jurisdiction of the High Court of Kolkata, Chennai and Mumbai. Next is Supreme Court हो गया, High Court हो गया. Next one is Subordinate Courts of India. The chapter 6 of part 6 of the Indian Constitution has made provisions for subordinate courts related to the judicial system. These courts are in the state level under the direct superintendence of High Court. The activities like appointment, promotion and posting of judges are made by the governor of the state by consulting respective High Court. The criteria of eligibility of district judge is that he must be an advocate for minimum 7 years with the recommendation of the respective high court. Respective high court has the sole discretionary power related to the administrative matters like posting, promotion or leave, which can be conferred by the condition of service as per the law applicable for subordinate कोर्ट्स. तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ इंडिया एक पार्ट हो गया इसका, और कैसे चलता है ये भी मैंने आपको बताया. और नेक्स्ट आपका जो है दिस इज पंचायत. पंचायत भी आपके जुडिशियल, अगर मैं बोलूँ व्हाट जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, तो उसमें पंचायत को भी इंक्लूड करना है. सो एज पर द प्रोविजंस मेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द डायरेक्टिव ऑफ पंचायत्स इज फिक्स्ड विच एंडोर्स द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस थ्रू आर्टिकल 40 ऑफ दिस पार्ट. सो जो सिंपल सिस्टम ऑफ इन्फॉर्म ऑल एप्लीकेशन, the panchayats are there is in the rural area, obviously we must know, to resolve the issues related to civil and criminal issues. So article 50 has made provisions separating the judiciary from the administrative executive deployed in the public service of the state. So these are the wings of what? Wings of judicial system of India. So when I say what is the judicial system of India, then आपके माइंड में ये 4 पार्ट्स अपने आप डेवलप हो जाने चाहिए. These are सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड पंचायत्स. इन सब से मिलके हमारा इंडिया का जुडिशियल सिस्टम कंप्लीट होता है. So that's enough for this lecture. We'll meet in our next lecture with a new topic. Thank you so much.